I'll request all of you, if you could rise up for the national anthem. Requesting ladies and gentlemen in the room, if all could rise up for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you so much, everyone. And now we'll be requesting our dignitaries for the lamp lighting ceremony. And for that, first up, may I invite Mr. Kumar Chandan Anand, founder, CEO and group editor, R.com Media Group. Up next, may I invite Sri Ajit Sarangi, CTO, Odisha Skill Development Authority, OSDA, Government of Odisha. Dr. Mamta Panda, Deputy Director, Higher Education Department, Government of Odisha. Srimati Subhashri Nanda, IAS, Chairperson, Council of Higher Secondary Education, Additional Secretary, School and Mass Education Department, Government of Odisha. Mr. Manik Kathuria, Regional Account Director, Coursera. Inviting the dignitaries for the lamp lighting ceremony. For the auspicious lamp lighting ceremony as we proceed on for the next session of the day. सर्वकारेषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Right, may I please invite Sri Ajit Sarangi, CTO, Odisha Skill Development Authority, OSDA, Government of Odisha, onto the stage. May I invite Srimati Subhashri Nanda, IAS, Chairperson, Council of Higher Secondary Education, Additional Secretary, Government, School and Mass Education Department, Government of Odisha. On the stage, please. Dr. Mamta Panda, Deputy Director, Higher Education Department, Government of Odisha. Sri Ajit Sarangi, CTO, Odisha Skill Development Authority, OSDA, Government of Odisha. Mr. Manik Kathuria, Regional Account Director, Coursera, onto the stage. I will request Mr. Kumar Chandan Anand, Founder, CEO and Group Editor, R.com Media Group, to present them with a bouquet.
Thank you so much. And now, may I please invite Mr. Kumar Chandanandan, founder, CEO, and group editor, Ardocom Media Group. I'll welcome you, sir, for the welcome address. Jai Jagannath. Namaskar, Odisha. Good morning to one and all, and cheers to good health, happiness, and prosperity. So before the session becomes little serious, as we have the serious audience over here, they are the senior leaders from the education fraternity. We have the representation from the government, we have the representation from the academia, and we have the representation from the corporate and the edtech industry. It's the perfect amalgamation of the PPP model. Being a guest invite, even as a delegate in this event, there are ample of opportunity when you see this event or the conference with a broader aspect. The opportunity could be a networking opportunity, it could be a collaboration opportunity, it could be sharing your ideas and innovations which you are doing in your premises under your leadership. So please be comfortable and consider this event as your event because you have made this successful. So interact as much as you can inside the audience people and outside the exhibitors. So that's my appeal when we start. So जैसे मैंने बताया कि ये इस इवेंट को सीरियस करने से पहले थोड़ा सा ह्यूमर ले आते हैं या थोड़ा सा इसको मूवमेंट को लाइट करते हैं और शायरी से बेटर ये क्या हो सकता है मीन्स वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट सिंस लॉन्ग आई विल बी लिटिल कंफर्टेबल इन माई लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश एंड हिंदी बट दिस forum is open. We can make this forum in a bilingual, including the Odia language, because the audience are pan from Odisha. So representation is from higher education, school education, technical education, skill education, and they are representing the finest institution for the entire Odisha state. So I think the audience and the speakers, you will be comfortable in the language which you speak because there you can connect better. So please pardon me and excuse me, but for you, you have the right to share your experiences, whatever language you are comfortable in. सो मिलकर एक जुगलबंदी करते हैं राइट सो जुगलबंदी जैसे मैं वो राइमिंग होता है द वे आई सेंड एंड दैट इट शुड क्लोज विथ अ राइमिंग पार्ट ऑफ इट कि हर इंसान में अच्छाई है और बुराई है तो आई विल कंटिन्यू विद दिस यू एग्री हर इंसान में अच्छाई है और बुराई है ठंड है तो रजाई है ये राइमिंग हो रहा है आई थिंक वो बहुत खुश है शायद बहुत कमाई है वो दुखी है शायद कुछ चीज गवाई है राइट आई थिंक वी आर कनेक्टिंग विथ ईच अदर नाउ सो कैसे शुरू किया था कि हर इंसान में अच्छाई है और बुराई है ठंड में तो रजाई है वो बहुत खुश है शायद बहुत कमाई है वो दुखी है शायद कुछ चीज गवाई है उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाया उस मंजिल तक मैं नहीं पहुंच पाया बहुत कठिनाई है ना मुश्किल नहीं है बट बहुत कठिनाई है उसको ऐसा लगा मिठाई में तो रसमलाई है मलाई तो मिठाई में तो रसमलाई है दुनिया में हर चीज पराई है दुनिया में हर चीज पराई है सिर्फ एक चीज अपनी है और वो बहुत काम आई है वो पढ़ाई है so that's how we are connecting with this event today और एक ह्यूमर की बात है कि ये कविता मैंने और अमन ने कल रात ही बनाई है ऐसा लगता है आप सबको बहुत पसंद आई है आप सब यहां पर आए और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया आप सबको बधाई है Can we have a huge round of applause for yourself? I, Kumar Chandanandan, the founder, CEO, and the group editor of Ardocom Media, I welcome and greet one and all on the stage. I welcome our guest of honor, Srimati Subhashi Nanda ma'am, the IAS Chairperson, Council of Higher Secondary Education, and Additional Secretary, School and Mass Education, Department, Government of Odisha. Ma'am, thank you for giving your precious time for this today's event. Can we have a clap for Subhashi Nanda ma'am? We welcome
Dr. Mamta Panda. She is the Deputy Director, Higher Education Department from Government of Odisha. Thank you, ma'am. Welcome. In fact, I was very lucky that I met Mr. Ajit Sarangi yesterday only, and he was very kind in accepting our invitation. And today, he thought that he should witness this event and make his contribution to this event. He is the CTO from OSDA. We call it as Odisha Skill Development Authority, Government of Odisha. And we have Mr. Manik Kathuria. He is the Regional Account Director from Coursera. Thank you so much, panelists. So we have the representation from school education, higher education, skill education, and the corporate. And me, the media person. So I'm being a little unbiased, creating this platform for you all. I also welcome our partners, the EdTech partner D2L, interactive display partner Samsung, online learning partner Coursera, credential partner TrueScholar, associate partner IBM, associate partners SAS, MetaEye, and HireMe. I welcome all our eminent speakers, invited guest delegates, and our partners today, representing the education fraternity from Pan Odisha and rest of India. I'm glad to see such a lovely gathering today at the temple city of India, Bhubaneswar. I'm really happy and glad to see you all. And with some, I think we have interacted many a times in our smaller events. And this is a bigger event where we have promised to few speakers and our guests last time, like the overwhelming experience which we had in this state and the invitation which they invited us open-heartedly, it helped us and motivated us to organize an event in such a big scale where we promised them that we'll be inviting the people from KG to PG, including skills at this event, and we'd even ensure that we invite certain policymakers and the government dignitaries. I'm thankful to Lord Jagannatha that he helped me and he gave me that power so that the young leaders like me and my small young entrepreneurs, we happen to execute this event today. So before I brief more about my organization, I think rather than a speech, if I play a display video, that will give you a better impact and an idea how Adacom Media is growing and what all we are doing in Adacom Media. Can we have a video of Adacom Media? Lights could be dim, please. Adacom is a growing media company enabling communities of education, HR, healthcare and wellness, governance, media entertainment and art, abbreviated as MEA, to effectively advance their businesses and strategic interest by becoming their collaboration and growth catalyst. Our passion is to co-create, co-learn and collaborate for innovation and socio-digital transformation. Here ADOR means passion, zeal, and COM stands for communication and community. Our 5 core values are aspiration, reimagination, digitalization, opportunity and readiness, abbreviated as ADOR. We are a team of passionate, enthusiastic young entrepreneurs, and we are creating a knowledge sharing platform to bring a positive change in the society by collaborating with the community leaders like you. And this is how we are co-creating the platforms of knowledge sharing.
become India's most desirable and leading media house and a media voice by enriching the communities with socio-digital transformation and creating an ecosystem of knowledge-sharing platform, information and news. And I appeal to the stakeholders of community, if we have done something extremely well in the sectors which we are, and you think that these are the content which is newsworthy, please share that content with us, and you consider us as your media partner. We ensure you that the newsworthy content will be getting the right space, and we'll be publishing that on our website, and we'll be amplifying it through the social media handles of Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter and YouTube. So this is a little highlight like what we have been done, and I may be emotional today because this is our, ma'am, sir, it is our third year of existence. We are just the startup baby as a media, and at the difficult times of COVID era, which was the VUCA phase, we dared to venture this company, and we named this company as Adorcom, where we just explained it's Ador means passion, and Zeal means, and Com means communication and community. And that is what we are doing. We are creating this platform for all the stakeholders over here. Now, a little glimpse of what we are doing today as a video of this event. So, when you consider that you have done something pretty well, you have your faculty members, So the kind of, thank you, sir, thank you so much. So the work which we are doing, we do this passionately. The earnings which we are getting is only from the sponsorship and the partnership. All our guests and all our invitees over here, it's only because we want their minds to be discussed in this event. And I'm not finding, I'm finding this event not less than the event which we do in Mumbai and Delhi, sir. So the kind of response which I am getting from the state of Odisha,
I'm sure the way the department and the academia and the skill is progressing, and they are hands in hands and shoulder to shoulder, they are helping each other to progress in the industry of academia, commendable. I'm very happy to see the seriousness of education, academia and skill in this state. We just missed to have the presence of ministers, but you have seen that it's a very important period in Odisha which is going on from 1st of April to 14th of April, and a very senior delegation from Delhi, they are coming over here. So because of that engagement, though they were not able to participate, but they have given their well wishes, and through a protocol hierarchy, the representation is there from the department. Thank you so much everyone for this. So as we have seen that this event is consisting of 70 plus speakers today. So there are two halls. One is the main conference hall with the entire agenda. I think you must have got the delegate kit bag. In the delegate kit bag, you have an agenda. So the entire agenda, the program sequence, along with the name of the speakers, the department which they are representing, all that sequence is mentioned in that agenda. So please follow that agenda to understand who are the people over there, so that later you can network with them as well. And the second hall is the Earth Hall, which is just next to the swimming pool. There the roundtable sessions are going on, but these are the closed door roundtable only for the invited guest delegates. So 2 roundtables of a D2L and 1 roundtable of FAMSung. We are going that in that hall. So 70 plus speakers, 5 plus panel discussion, this conference hall. Roundtable, as I said, that one roundtable is starting at in the morning, and the second was in the second half. Industry presentations on the relevant and very interesting topics. EdTech Expo booths are there outside. They're showcasing and displaying some trending solutions and innovation to help make your campus smart, to make your campus digitally equipped. So whenever you get time, please interact with them as well. Then when we progress towards in the evening, we have the award ceremony and the felicitation ceremony. So panel speakers we are felicitating along with their panel after the panel closes. But for the rest of the delegates, the invited education leaders will be felicitating you at 4:45 onwards during the felicitation ceremony on this stage. And please be there till the event time so that we can have your individual photographs and group photographs. And the entire event is actually going live on Facebook. You can follow our social media handles. It's ADORCOM, very simple spelling, ARDORCOMM. Everybody is having a smartphone. Please go to your search bars of Twitter, Instagram, LinkedIn, whatever you are comfortable in. We are there. You can find your pictures over there. In fact, our team has given a lot of effort in designing your creatives and uploading that on the social media, tagging you. Some of them, they were not able to find your tags of your institute or of your individual. I would request them to go back, search your pictures in the social media, tag yourself, so that the people outside this hall, they are also aware why we have gathered today in this event and what we are talking. Is it something fruitful for the community, for you? So this event is going to be helpful for the students. It is going to be helpful for the faculty member who could not attend, and to the owners and the senior leadership whom you are representing over here. So this is a message that it should go to them as well, what we are talking over here. So please use social media and digital media to amplify your work which you are doing over here. They will also feel excited and glad that my teachers are here and they are talking something very useful, which is ultimately related to them only. We could not accommodate everyone in this hall, hence we have invited only the leadership to be over here. So, and please don't worry about the pictures and the videos. I'm aware everybody is in their respective WhatsApp group. Please remain over there. After this event, we'll dissolve this WhatsApp group and we'll be creating a leadership group of Academia of Odisha. We'll do that. We are going to continue with this WhatsApp group. Every picture in a high resolution digital format will be shared in this group. After this event, allow us a day's time, and in that you'll be getting the links of all the pictures, and the videos will take another 2-3 days time. So that is how we are going to share everything. So and one more request, मैंने बहुत events में देखा है. So there are 2 people. One is the main photographer of the hall, जो सामने से picture ले रहा है, और एक उनके साथ में एक attendee है जो मोबाइल से picture ले रहा है. तो जो picture आपके साथ share होगी, आपकी picture ऐसे आने वाली है अगर मोबाइल से जिसने लिया तो, और फोटोग्राफ सामने से हो रहा है, और सब आप इधर साइड पे देख रहे हो, और मेन पिक्चर जो आप वो मिस कर रहे हो. सो प्लीज़ आप पहले सामने का पिक्चर ले लो और फिर साइड का पिक्चर लो, सो दैट योर फोटोग्राफ इज कमिंग इन अ करेक्ट डायरेक्शन. नहीं तो सबकी आंखें ऐसे आएंगी क्योंकि वो मोबाइल पे देख रहे होते हैं और मेन पिक्चर आपने मिस कर दिया जो यहाँ पर खड़े हैं लोग.
So a round of applause for our photographers and videographers also. They are making a lot of sense to this event. A round of applause for the console team. They will help us to make this event timely and to execute with a good sound and a good lighting over here. Thank you guys. So I'll invite the MC of the day now to please take the session forward. Yeah, Pramita Mohapatra, her name is. So thank you, Pramita, for making this session wonderful. A huge round of applause for Chandan Anand for me. Thank you so much. Okay, I was anyway going to, say a big round of applause for you for the banter and the humor that you brought in. And I must say one thing, you are the admin like everyone desires to have in a WhatsApp group. Well, can we have a big round of applause for that? Because, they're so systematic when we don't get the pictures, especially women problems, when they don't get pictures and there are a marathon of texts in the WhatsApp group and you're all wondering like, who is the right person to get into? I wish everyone gets an admin like you, and thank you for the knowledge that you also shared, and what a wonderful welcome that was. But Dr. Mamta Panda, Deputy Director, Higher Education Department, Government of Orissa. Ladies and gentlemen, may we please welcome her with a big round of applause. ओडिया पक्ष पालन अवसर रे ओडिशार से सुयोग्य बिंधाणी जो मैंने प्रातस्मरणीय प्रातबरणीय जो मानक आमे आज स्वतंत्र उत्कल प्रदेश पाई परिछु जहाँ आमे आज गर्वर सहित कहूँ आमे ओडिया आम भाषा बढ़िया से मानक उद्देश्य रे प्रणाम जणाई मु मोर वक्तव्य आरंभ करुछि। मंचासीन तथा मंच बाहर रहिथिबा विज्ञ सुदीजन को मोर सादर प्रणाम। At the outset, let me thank our CEO friend for choosing such a thought-provoking theme which is very relevant in this 21st century. So actually, frankly speaking, after the introduction of National Education Policy 2020, we were compelled to rethink education, because as we can all envisage that what we were used to get in our childhood, there is a paradigm shift in what we are used to get and what we are now giving to our students. So there is a change in the educational landscape. I am using the word landscape because there is variation. So this change in the educational landscape, initially though we can say that we are taking just baby steps, but now we are almost pacing with speed. So somehow you can say we are chasing. Because if you can recollect the things properly, at the time of our independence, only we have got one university and 12 some colleges are there. But now, all over the state, we have 42 universities and more than 1,500 colleges under different departments of government of Odisha. So from these baby steps to these large steps, we can say. So this is called, we can say, this transformation. And this transformation is, as you can see, whether it is a natural landscape or it's a man-made landscape, this is not brought in a single day. It's a continuous process. And in this continuous process of transformation, so the key role, as you can well understand, that's the talent. So the talent, may it be the inherent talent, or it may be the acquired talent, or it may be the superimposed talent. So these talents, or you can say the skills, so together with the technology, and in this digital era, you will all agree with me that a tiny tot who is barely 1 year old, he know how to use this. Leave us with the elder thing. So, with the help of this technology, this higher education has you can say that a equitable educational landscape, and the role of higher education is pivotal.
So starting from the making this education equitable and inclusive, now in the state, this higher education department has 17 universities, public universities, 7 private universities, 3 deemed universities, and 1 central universities, and more than 1,000 affiliated colleges. And in all these colleges, after this introduction of this NEP 2020, we have changed the undergraduate curriculum, of course, some 40 curricula we have changed, incorporating this NCC, NSS, sports, yoga, this internship, and skill-based programs. I won't much take time because of this NEP, because you all know that there is multiple exit and multiple entry and multiple exit is also there. And those who are involved with NCC and NHS, they must appreciate how they are building the leaders, how these students who have taken this NCC and NHS, they are serving the nation, how they are useful in the awareness programs. So besides that, after creating, and you can say that, yes, of course, at the same time, let me tell you that recently also we have added 18 government colleges in the most inaccessible blocks where the education was not there earlier. So in order to give them a friendly or conducive atmosphere, intellectual conducive atmosphere, so higher education department in this 24-25 session, so they have extended almost, you can say, if I recollect the figure correctly, 677 crores towards the infrastructure. And these infrastructures for the development of multidisciplinary research education universities, grants for strengthening universities, grants for strengthening colleges. Besides that, so a student in a halfway, they should not leave the education because of this poverty or some like this financial constraint. So department is also extending scholarships under the umbrella scheme of Mukhyamantri scholarship agency scheme. So there we used to give scholarship, so PG merit, UG merit, this your professional merit scholarships, Fakir Mohan Bhasha Pruti scholarship, Gopabandhu Shiksha Sahayata Yojana, and of course there is the Green Passage. So besides these scholarships also, my friend from Coursera and also the SGT is say they are there, and he has already mentioned that they are helping the higher education department. And higher education department, with the help of this Coursera and also this ASCOM and also Bajaj Finastab, they have got this their CSR program. We are extending our students some academia industry courses, so that these will make them financially independent and socially stable. So besides that, higher education also, I think you almost be knowing that we have started these UPSC coaching systems for our students. And also, not to leave about our age-old knowledge system, Indian knowledge systems, we have also started add-on courses on Indian knowledge systems like Gita, Upanishad, Yoga, and also this Ayurveda in 3 universities. So we have started all these things, and but at the same time, we feel that by doing this thing, we can make our students a workforce to face the challenges of 21st century. But as an individual, I think there is a gap. Why there is a gap? We can say there is a chasm, a big gap. A big gap between we, the policy makers, we have made the policies, and you are who are in the field, you are at the implementation level. And there, I think, there is some gap in the implementation level, in the sense that I think you all must have seen that now these our youngsters
So there is a loss of human touch. And nowadays, they are much aggressive. And if you can, I don't know whether I must mention it or not, but so many divorce cases are there. And so very pathetic is that there are reports of suicide from the quota. And also, there is report of suicide from the IITs, which are at the pinnacle. And if you look at the lower level, just I think if you can recollect properly, so 3-4 days back in the newspaper, there is a clip that one class 8 students committed suicide because the teacher, the school, they didn't allow her to appear the examination because she had not paid the fees. Could that school manage those things? So that's why I'm telling that those who are at the implementation level, those who are the teachers, who are shaping the young minds, those who are shaping our leaders, our future leaders, so they have got a greater role to play. And besides that education, so let it be the education or education in their own field, or say these industrial fields or all those things, together with that, they need to teach the students about the life skill. And this life skill, I think that we cannot inculcate them in our syllabi or in the curricula. Though higher education has started these courses on morals and ethics, and also to help the students or these students who are suffering from depressions, we have got that Telemanas program is also there. But still then, I feel they are not that was sufficient. So it's the role of the teachers in the classroom. So they have to teach the students. So they have to shape the young mind. So in this connection, may I get 2 minutes more? So just I will tell one story. Because as you know, we all love to hear stories, bedtime stories, which we used to get. But sorry to say that now these young children hardly they get it. But anyway, so this story, this is all about one king. So he was a mighty king and he has got one son. So he has given all sorts of trainings, all sorts of education to his son. When the time came, the retirement of the king, he one day asked his son, so son, I want to have your coronation very soon. But before that, I want you to go and meet my Gurudev, who is in the forest. Being very obedient son, his son said, yes, I will go, just let me know where he is living and all those things. So after getting proper instruction, the son went to his father's Gurudev, the Rishi. So when the Rishi saw the son, so yes, asked, yes, my boy, what makes you to come here? Then he told about his father. So when the Rishi heard that his father has sent this boy before the coronation, so he could know the underlying message of the king. Then he said, yes, now it is already night, let's have dinner, and in the morning we will discuss about these things. In the morning, the Rishi sent the boy. Before sending the boy, he told him that, so you just go towards the extreme eastern side of our territory, the forest is the landmark, okay, this is the demarcation. So, and return by evening. So when the boy returned, the Rishi asked him, so give me your report, what you saw, what you feel. So the boy told, sir, I actually saw huge hills and mountains are there, and the rivers are flowing with mighty noise, and all these things are, and you know, so there is thunderstorm, and the trees are breaking with loud noise, and also I heard the trumpets of elements, and all these animals, their sounds, and all these things are there. So he is a little bit disturbed, but the Rishi then told, my boy, are you safe? No, sir, yes, I am safe. Then the Rishi told, yes, so you now can go back and tell your father that we may a little bit do this coronation ceremony 1 year late. A little bit disappointed, the son go back, the young prince go back and gave the message to his father king. So when the father
heard his son, he got the message. He just patted his back. Yes, don't worry. Just help me in the administration of our country. Then another year went by. Then again, the father king sent his son to the rishi. So the rishi told him, you know what you have to do? Oh, yes, I know. So you now go, and after return back, just tell me your experience. So when the young prince came back, this time when asked the rishi, so what's your experience, my boy? He said, sir, I saw a brook is flowing. I saw the squirrels, they are chasing each other. And I saw a snake slither down the dry leaves and the grasses. The rishi again smiled. Yes, my boy, it's very fine, but still go and tell your father that coronation may be belated by 1 year. So though disappointed inside, being the obedient son, and he know how to give respect to others, so he went back and conveyed the message. This time also, the father king patted him, yes, don't worry. So be with me, just help me. Then the third year came. The king again sent his son. So this time, okay, the rishi also told him, you go, the same thing, you go and just report me after evening. So in the evening, when the young prince came back, he said, Gurudev, I heard the ants crawl. I am again mentioning the words, I heard the ants crawl. I heard the bees is buzzing. I see the fragrance. I feel the fragrance. I see the different beautiful colored flowers. And also, I tasted the water of river at different places, and they taste differently. And most importantly, I heard the silence among the loud noise of the forest. There is a big smile in the face of the rishi. He patted the son. So now you can go and tell your father that he will arrange the coronation. So at this, the boy was very happy, but he asked, Mahatman, can you please do me a favor? Will you please explain why you send me to the same place thrice? The rishi told, boy, for the first time when you went into forest and after coming back, you have seen all the big things, all the loudest things. But towards the last, when you came back, you were able to listen the tiniest of voice. Even you were able to listen the silence. I think I conveyed my message. Thank you all. And one more thing. So, rather questions, I will invite suggestions, because we at the policy makers, we do faces a lot of problems and challenges. So, instead of questions, I will invite suggestions from you so that we will able to change, or we will able to make some modifications and all those things. Thank you. Thank you, ma'am, for your beautiful narration of NEP 2020. And as we know, in the NEP 2020, our government is going to implement that, and partly it is going to be implemented. So where there is multiple entry and multiple exist. Yes. But one thing that has come to my mind, I have written it, I just want to ask you, how effectively has Odisha integrated vocational education, skill development and mother tongue based multilingual education in alignment with NEP 2020 guidelines at the higher education level? Yes, actually at higher education level, so we do have this not much independence regarding this multilingualism, because we know, yes, there is instruction for the, this instruction should be in the mother tongue, okay? But at the school level and in the college level, yes, we have started translating the books, the science books and the arts books and all these books in the Odia. And besides that also,
we are trying to give the student, yes, of course, let me also tell you that in higher education, we are allowing our students to write their answers in their mother tongue, particularly in Odia. So far this multilingualism is concerned, so we have already started that. And regarding this vocational education, yes, we are trying for that because we have got academia industry interface, and our Coursera friends and NASCOM friends, they are there, and we have got these internship programs for our students. So we are now just trying to bridge the gap. Is there any problem in facing like multiple entry and multiple exist? How it will be implemented? No, yes, exactly. Actually, this is the beginning, let me tell you. Yes. So already we have seen that, and actually the thing is that, so what we are now implementing it, we have learned and we have seen it from outside. And as you can know, almost in almost all the European countries, they have got this multiple entry and this exit is also there. And they have not faced any problem. And so far Odisha and India is concerned, so we have got at the diploma level, at the first year, we have got the diploma courses, then this advanced certificate course, then this bachelor course, then this there will be the PhD program. So right. So when a student exit at the first year, so he is having a diploma course. So with that, with this knowledge and with this certificate, he can generate employability for him. And if he exit in the second year, he has got the advanced certificate. So like this, I don't think that after exiting at, if we will have multiple exits for the students, I think they can cope up. And if they can't cope up, we do have that this multiple entry is also there. We can also invite them, yes, you can come and make yourself assigned in the mainstream. So I don't think that will be any problem, sir. Thank you. Thank you so much, Mamta ma'am. I think your stories were really intriguing to hear with so much experience in whatever happens in this practical world today. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, I would like to invite a very special guest, the guest of honor with us, who, with an unwavering commitment to educational excellence and transformative governance, is a dedicated administrator shaping the future of education in the state. May I please invite Srimati Shubhashri Nanda, IAS, Chairperson, Council of Higher Secondary Educational, Additional Secretary, School and Mass Education Department, Government of Orissa. Thank you so much, ma'am. शुभ सकाळ स्वागतम समस्तंकु नमस्कार। आज आडरकम मीडिया तरफरु आयोजित ए शिक्षा सम्मेलनी निश्चित भाव में ओडिशा पाई गर्व एवं गौरवर विषय। आज सभा मंच रे उपस्थित श्रीयुक्त अजित षडंगी महोदय, डॉक्टर ममता पंडा महोदया, श्रीयुक्त मानिक काठुरिया महोदय एवं यार मुख्य आयोजक चंदन आनंद महोदय, उपस्थित विज्ञ शिक्षाविद वृंद। न हि ज्ञानेन सदृशं परं बलम्, ज्ञान ही शिक्षा ही परिवर्तन वार्तावह। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। शिक्षा मानविकतार परिस्फुटन में परम सहायक। तेणु शिक्षा बिना जीवन नहीं, शिक्षा ही जीवन। यही परिप्रेक्षी रे सकाळु अनेक आलोचना पर्यालोचना सरिलाणी। तेबे एठी गोटे कथा मने पड़ुछि कालामकर, लर्निंग गिव्स यू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, एंड थिंकिंग गिव्स यू नॉलेज, एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। तेणु एइभली एक सम्मेलन आयोजन करिथिबारु शिक्षक, शिक्षाविद एवं एथि सहित संपृक्त विभिन्न संस्था को गोटे परिसर मध्य एकाठी करि पारथिबारु
श्रीयुक्त चंदन आनंद महोदय को अनेक अनेक हार्दिक अभिनंदन। मु ए शिक्षा विभागर दायित्व रे रहिछि एवं काउंसिल चेयरपर्सन भाबरे मध्य कार्य करुछि। तेणु ए विभाग विषय रे एवं शिक्षा क्षेत्र रे आमे कौन कौन कार्यक्रम ग्रहण करिछु से विषय रे आपण को सम्यक सूचना देबी। वर्तमान आम विभाग अधीन रे 61,000 रु ऊर्ध्व स्कूल रही, 76 लाख रु ऊर्ध्व छात्र छात्री रही एवं 3,34,000 रु अधिक शिक्षक शिक्षयित्री अछंती। एई अधीन रे हमर 3टी जो माने परीक्षा नियंत्रण करूछंती, काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एवं मद्रासा बोर्ड मध्य रही। उर्दू शिक्षार जो परीक्षा तांको माध्यम रे कंडक्ट करा जाउची, जहाँकि माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय अधीन रे रही। ता छड़ा आमर 11टी निर्देशालय बा डायरेक्टरेट रही। तेणु एसबू को नहीं आमे नूतन शिक्षा नीति आधार रे किभली भाव रे शिक्षार परिवर्तन करी समाज रे शिक्षा विस्तार रास्ता को अधिक सुगम उन्मुक्त करिबा, सेथिपई अनेक कार्यक्रम राज्य सरकार तरफ ग्रहण करा जाइछि। आपण माने जानिथिबे निकट रे आमे नूतन शिक्षा नीति अनुଯାयी शिशु बाटिका आरंभ करिछु, जहाँ कहते बाल बाटिका नूतन एजुकेशन पॉलिसी रे। तेणु प्री प्राइमरी एजुकेशन चलित वर्ष प्रथम थर पई राज्य रे शिशु बाटिकार कार्यक्रम हाथ को निया जाइछि। ता छड़ा मध्याह्न भोजन मध्य दिया जाउछि। मध्याह्न भोजन रे वर्तमान नवम दशम श्रेणी रो छात्र छात्री माननकु मध्य आमे अंतर्भुक्त करिछु। तेबे जो जो इनिशिएटिव्स आम विभाग तरफ निया जाइछि, एलिमेंटरी एजुकेशन जोटा प्राथमिक शिक्षा जहाँ को कहउछंती FLN, जोटा कि मुख्य शिक्षार मूल भित्ति। तेणु ताकू सुदृढ़ करिया पई प्रथमे आमे ताकू अग्राधिकार देइछु। ता छड़ा आमर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किभली भाव रे प्राथमिक पर्याय रे प्राथमिक स्कूल गुडी को सुंदर भाव रे भल भाव रे आमे देई परिबु, सेथिपई गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना कार्यकारी करा जाइछि। प्रति पंचायत रे गोटिए प्राथमिक विद्यालय को समस्त प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देमती दिया जिवो, सेथिपई हमर गाइडलाइंस मध्य प्रस्तुति सरीची। ता छड़ा हमर माध्यमिक स्तर रे स्कॉलरशिप प्रदान करा जाउची। आम वृत्ति योजना रे जो माने भल स्टूडेंट्स हमर स्कॉलरशिप पोर्टल मध्य रही, केवल स्कूल रे नुह उच्च शिक्षा रे मध्य से भली पोर्टल आमे करिछु। ता छड़ा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार विगत वर्ष ठारू दिया जाउची। 44,428 टी पुरस्कार दिया जाइछि। शिक्षक मानू शिक्षाविद मानू छात्र छात्री मानू विभिन्न पर्याय विभिन्न क्रम आमे पुरस्कृत करुछु। एई पुरस्कार पाइथिबा किछि शिक्षक मानू मध्य आमे एक्सपोजर विजिट रे अन्यान्य देश को तथा आमर भारतर अन्य राज्य को मध्य से माने जाउचंती। तेणु एक्सचेंज प्रोग्राम मध्य होउची। ता छड़ा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार व्यतीत आमर गोटे रही आमर पंचसखा शिक्षा सेतु, जहाँकि जो पिला माने छात्र छात्री माने आगुरु पढ़ुतिले आलुमनाई कनेक्ट, से माने किभली तांकर जहाँ से शिक्षा ग्रहण करछंती से शिक्षायतन को तांकर किपरि भाव रे से माने मध्य किछि सहाय्य करि परिबे, इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू रे करंतु किंबा निजे कोनोसी क्लास नहीं गिरी पिलांको किछि क्लास नहीं गिरी उपयुक्त शिक्षा प्रदान करी हो विभिन्न पर्याय रे। तेणु पंचसखा शिक्षा सेतु मध्य गठित करा जाइछि एवं तदनुଯାयी से माने एकाठी मिसिकरी जेतिकी फंडिंग करिवे सेईर 2 गुणा फंडिंग राज्य सरकार तरफ करा जिवो। ता छड़ा तार अलगा गाइडलाइंस मध्य प्रस्तुत करा जाइछि। पुणी PM श्री प्रोग्राम जोटा आरंभ कराई 500 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। सेथिरे 462 स्कूल को स्थिर कराई ताको PM श्री विद्यालय रे परिवर्तन करा जिवो।
कैपेसिटी बिल्डिंग मध्य करा जाउछि हमर जोटा ओसेपा रही माध्यम किभली भाव में शिक्षक मानकर कैपेसिटी बिल्डिंग हो पारिबो से माने पाठपढ़ार विभिन्न दिगंत उपरे विस्तृत भाव में आलोचना करें कारण नूतन शिक्षा नीति आपण मैंने समस्ते शिक्षाविद जानी टीचर्स ट्रेनिंग उपरे विशेष प्राधान्य दि जाउछि आमर राज्य में 30टी डाएट रही ता मध्यरु जो माने कि टीचर्स माननको ट्रेनिंग दिउचंती सेमानक मध्यरु 12टी डाएट को आमे सेंटर ऑफ एक्सलेंस रे परिणत करिया पई टंकार व्यवहार मध्य करा जाइछि एठी मध्य कहि रखे जोटा आमर बजेट थिला शिक्षा विभाग रो 2021-22 रे जोटा 17,000 कोटी टंका थिला ता 23-24 को 26,000 कोटी टंका रु अधिक कराइछि तेणु शिक्षा क्षेत्र रे विशेष प्राधान्य राज्य सरकार तरफ दिया जाउछि आमर शिक्षा सचेतनता सृष्टि करा जिवा जगु ड्रॉप आउट हार 23-24 रे 12 शतकड़ा 12 भाग को खसी आसथिला जहाँकि आगुरु 21-22 रे 27% थिला तेणु एसबू को अनुध्यान कले निश्चित भाव में राज्यर शिक्षा क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन करा जाइछि सेथिरे आपण मानकर मध्य सहभागिता समभागिता रही प्रत्येक स्तर रे विद्यालय स्तर रे शिक्षक शिक्षयित्री मानकर कहतु किंबा सरकारी स्तर रे प्रशासनिक स्तर रे तथा जो माने शिक्षा प्रशासन अधिकारी जो माने बीईओ अछंती ब्लॉक स्तर रे एजुकेशन ऑफिसर जिला शिक्षाधिकारी जो माने अछंती समस्ते सेमानंकर दायित्व जदि उपयुक्त भाव में निर्वाह करिवे निश्चित भाव में आमर शिक्षा व्यवस्था अत्यधिक सुंदर सुशृंखलित हो पारिबो एथिरे संदेह नहीं। ता छड़ा शिक्षा होची गोटे माध्यम जहाँकि आमर केवल शिक्षा क्षेत्र नुह संस्कृति हो प्रजुक्ति हो पर्यटन हो प्रत्येक क्षेत्र में साहित्य हो सबु क्षेत्र में शिक्षार भूमिका रही। स्वामी विवेकानंद कही हे भारतर युवक गण उठ जाग शुभ मुहूर्त समागत हृदय उत्साह अग्नि प्रज्वलित करी जागी उठ आउ शिक्षा 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 केवल शिक्षा ही आमर प्रगतिर वार्ता ताहा जेमती आम समस्तंकर हृदय रे अनुरणन सृष्टि करू त्यागन एके अमृतत्व मानसु मनीष शिक्षा द्वारा ही त्याग सेवा मानविकतार जो वार्ता ग्रहण करि परिबो जहाँ कहते ममता मैडम वर्तमान पिलामानंक मध्यरे एई प्रकार जो मानसिक अवसाद देखा दउची किंबा शिक्षक एवं शिक्षयित्री सहित छात्र छात्री मानकर संपर्कर आगुरु जो भली भाव में भावधारा रही थिला ताहा क्रमशः कमी आसुची सेमानंकु निकटतर होबाकु पड़िबो होलिस्टिक डेवलपमेंट करिबाकु पड़िबो व्यक्तित्वर विकास चरित्रर विकास मानविकतार विकास मध्य शिक्षा विकासर गोटे अन्यतम भित्तिभूमि तेणु केवल इंफ्रास्ट्रक्चर गढ़ीदेले हेबनी केवल आमे पाठ पढ़ी डिग्री हासिल कले हेबनी आमर मानविकतार मंत्र सेमानंकु दबाकु पड़िबो जहाँ फल आमे समाज रे गोटे सामाजिक मूल्यबोध संपन्न गोटे सुनागरिक जो छात्र छात्री माने काली भविष्यतर नागरिक तांको भितरे एई जो गुण सेवा दया क्षमा नेतृत्व नबार जो अभिप्सा उद्दीपना से सबू आमको तांको भितरे अंकुरोद्गम करने को पड़ो शिक्षक शिक्षयित्री द्वारा बुद्धिजीवी मानक द्वारा आपण मानक भली शिक्षाविद मानक द्वारा आर्डर कम भली विभिन्न संस्था माध्यम जो माने सामाजिक मूल्यबोध को प्राधान्य दौरान तेणु वर्तमान समय आसी आमे समस्ते एकाठी हवा आपण माने तो ये डाटा एंड अदर्स जेतेबेले चाहिए विभिन्न भाव में पाई परिवे किंतु आपण मानकर मूल्यबोध आपण मानकर जहाँ मतामत रही सजेशन रही ताहाकु जदि आपण माने शेयर करिवे आमे परीक्षा पद्धति रे मध्य किछिटा परिवर्तन एथर करिचु कारण जो सीबीएसई ढांचा रे एथर +2 परीक्षाटा आयोजन करा जाइछि एवं स्क्वाड माने एथर प्रथम थर पई विभिन्न जिले रे जाई रहिले एवं जहाँ फल कि परीक्षा रे केवल कैमेरा लगी गले हेबनी ताकू सुपरिचालित करने को पड़ो ताकू उपयुक्त भाव में ट्रेनिंग दिगला एवं समस्त तरफरु मध्य एई नूतन आमे आभिमुख्य जो ग्रहण कलु समस्ते ताकू एप्रिशिएट करचंती सेई भली भाव में
जदि आमर पिलामानंकु आमे उपयुक्त शिक्षा प्रदान करिबा ताहले जाइकरी एई समाज रुचिमंत रुधिमंत जीवंत सरस एवं सुंदर हेई परिबो। तेणु वर्तमान समय आसी वेद उपनिषदर से गुरुकुल परंपरार जहाँ महत्व रही ताकू मध्य आमे ग्रहण करिबा। प्रजुक्ति विद्यार आमर जेमती विकास सहित आमे जेमती कोडिंग को स्कूल करिकुलम रे आमे एकाठी करिछु। आमे नूतन शिक्षा नीति आधार रे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आधार रे आमर स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क रो प्रस्तुति चलीची। आपण मानक भली अनेक शिक्षाविद मध्य सेतिरे मेंबर अछंती। आमर 6टी थीमेटिक सब कमिटी गठन करा जायछि एवं राज्य स्तर रे गोटे स्टीयरिंग कमिटी मध्य गठन करा जायछि। तेणु पूरा पूर्ण प्राण रे समस्ते सहयोग करुचंती शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुपरिचालित करिया पई। तेणु आपण मानकर साहाय्य सहयोग मध्य सेथि पई हमर दरकार। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कथा जने कहउथिले हमर 21टी जोटा ट्राइबल लैंग्वेज रे मध्य शिक्षा प्रदान करा जाउछि। जोथरे ट्राइबल लैंग्वेज जानिथिबा शिक्षक माने 17टा जिल्ला रे शिक्षा प्रदान करूछंती। ता छड़ा जो माने सीजनल वर्कर रही जो माने बाहर को पलाउछंती काम करिया को तांको पिला मानकु पाठ पढ़िया को स्कोप मिलुनी सेति पई गोटे रेसिडेंशियल स्कूल करा जायछि 103टी विभिन्न जिल्ला रे जोठी बेसी बाहर को श्रम करिया पई तांकर बापा माँ जाउछंती से माने सेही 6 मास रु 9 मास सेही जिल्ला रे रहिबे रेसिडेंशियल स्कूल ले। ता छड़ा आदर्श आमर ओएवी ओडिशा आदर्श विद्यालय मध्य प्रति ब्लॉक रे करा जायछि एवं सेठी अनेक जगह हॉस्टेल प्रस्तुति सरीगलानी पिला माने हॉस्टेल रे रहउचंती किंबा तांको अन्य कम्युनिकेशन माध्यम कराई सरकार तरफ से माने आसी इंग्राजी माध्यम रे पाठ पढ़ुछंती 6ठ माने 10th क्लास पर्यंत ताको आमे चिंता करूचु। सेथिरे 11 12 को मध्य इनक्लूड करिया पई हमर प्रचेष्टा चलीची तथा हमर आइकनिक ओडिशा आदर्श विद्यालय जोटा हिची सेठी पिला मानकु स्वतंत्र भाबरे कोचिंग दिया जाउची भल स्टूडेंट मानकु से मानकु प्रकृत दिग्दर्शन दिया जाउची किभली भाबरे तांकर प्रतिभार तांकर टैलेंट रो विकास हेई परिबो। तेणु आदर्श विद्यालय छड़ा आमे जो माने डायरेक्टरेट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन 169टी हाई स्कूल को एमे अपग्रेड करिछु। ता छड़ा अन्य हाई स्कूल गुडिक समस्त हाई स्कूल पर्यायक्रमे 11th 12th सेथिरे आमे करिबो क्लास। तापरे ता सहित से माने किभली भाबरे ऑनलाइन कोचिंग आमे गोटे स्टार्ट करिछु आर वर्षटू जो कॉलेज माने से माने विभिन्न स्पेशली केतोटी सब्जेक्ट रे सबु सब्जेक्ट रे हेई पारिनी ऑनलाइन कोचिंग दिया जाउची जो माने नीट एंड जेई परीक्षा देबे से मानको किछिटा दिग्दर्शन दबा पई। ता छड़ा ई कंटेंट मध्य प्रिपेयर कराइछि 9th 10th पिलांका पई 11th 12th पई मध्य हमर ई कंटेंट पई खान एकेडमी सहित केवल साइंस पई केतोटी एमओयू कराइछि ओसेपा सहित हमर सीएचएससी तरफ मध्य ई कंटेंट पई प्रस्तुति जारी रही। अनेक गुड़िए सब्जेक्ट रही +2 स्तर रे। तेणु वर्तमान समय आसी शिक्षा व्यवस्था को आमे अधिक सुशृंखलित करिबा सुपरिचालित करिबा। तेणु आम समस्तंकर साहाय्य सहयोग मु आशा करूची। से वेदर बाणी आम मान पाखे फलवती हो संग छद्वं संबोदध्वं संबो मनांसी जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजाना ना उपासते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुभश्री मैम। आपणक सुंदर और प्रेरणादायक कथा आम पाई बहुत मैटर करे आपण आपणकर बहुमूल्य समय भी आमको देले से आमे धन्यवाद जनाउछु। अप नेक्स्ट वी आर डिलाइटेड टू वेलकम Mr. Manik Kathuria, Regional Account Director at Coursera, one of world's leading online learning platforms. Mr. Manik, we are eager to hear your insights on how Coursera is shaping the future of learning. The stage is all yours. Thank you so much. I will just request for a minute for me to set up. Till the time setting is going on, anybody has a question from any of the three panelists over here?
we can utilize this time for the question answer. Can we have the mic to that gentleman, please? Sir, one suggestion. सर आप तो विनर हो सर. नहीं, आपके लिए एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज सर. Only, sir, मैं दूसरे को भी मौका दीजिए सर. Please, people are waiting here. I'll come back to you, but let me have the variation of the questions from other speakers. Is ready? So I'll take one question. हेलो Sir, question only. Yeah. मैडम जो नंद आईएएस जो कथा कहले प्राइमरी एजुकेशन रे आमे भी गाँव रु आसचु प्राइमरी एजुकेशन रे जो पिला माने पढ़ुचंती दैनंदिन उपस्थान सप्तम अष्टम नवम दशम पर्यंत आमे सिथरे जहाँ रिपोर्ट आसुची सरकार पाखरे रहुची वास्तविक की प्रथम प्रश्न. द्वितीय प्रश्न आमे पाठ पढ़ुला बेले सप्तम श्रेणी रे गोटे एनआरटीएस गोटे परीक्षा होता एबे से परीक्षार वास्तव रूप पाउची कि. तृतीय प्रश्न जे दशम श्रेणी पास करके आसुला बेले विभिन्न इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रे बा पॉलिटेक्निक रे पिला जो पाठ पढ़ुचंती बा +2 रे जो पिला पाठ पढ़ुचंती सेमानकर मौलिकता बा मानसिकता ठीक रहुची कि. तीनोटी प्रश्न परे आउ आगो को जिबा ये तीनोटी प्रश्नर मैडम उत्तर देबे कि. प्राइमरी स्तर रे जो स्कूल माने पिला संख्या जहाँ कहा होची सेथिरे आपण एकमत नुहंती किंतु वर्तमान आमर जहाँ डाटा कहूची आमे स्पेशल इनिशिएटिव नहींचु पिला माने आमर एनआईओएस एवं एसआईओएस जेमती रही आमर जो माने पाठ अधारू छाड़ीचंती सेमानंको मध्य आमे प्रोत्साहित करूछु. प्राय 15,000 रु अधिक पिला 15,000 नुहे 18,000 रु अधिक पिला गोटे स्पेशल ड्राइव आमे करिथिलु विगत वर्ष जो माने पाठ अधारू छाड़ीचंती बा कोनोसी कारणरू रही जाइचंती स्कूल मैनेजमेंट कमिटी से गाँव रो जो माने मुख्य लोक अछंती तथा शिक्षक शिक्षयित्री से माने घर को घर बुली कौन पाई से पाठ छाड़ुची सेथिपाई तांको आमे माने प्रेरणा देला परे प्राय 18,000 रु अधिक पिला आसी से माने स्कूल आसुथिले कारण स्कूल ले सेमानकर ना थिले मध्य विभिन्न कारणवशत से तांकर बापा माँ माने कृषि क्षेत्र को पठे दौथिले अन्य काम रे पठे दौथिले तेणु तांको जेतेबेले एनकरेज करागला निश्चित भाव में से संख्या वृद्धि पाई ड्रप आउट हार जहाँ होती कमी ता ठीक अच्छी आउ सचेतनता रथ एबे जाइथिला हमर प्रति जिल्ला रे कुआ जाइछि जे शिक्षा विषय रे सचेतन करिया पई प्रत्येक पितामाता को समाज को से माने रथ माध्यम रे विभिन्न एनकरेजिंग स्लोगान माध्यम रे गोटे शोभायात्रा माध्यम रे समस्त भितर शिक्षा सचेतनता सृष्टि करछंती ता छड़ा आउ गोटे क्वेश्चन आपण कहले जोटा धंदामूलक शिक्षा कथा बोधे कहउचंती आपण माने कारण कथा कहउतली जो पिला माने दशम श्रेणी पास करके आसुचंती हां वास्तविक सेमानकर माइंडसेट अछि कि व्यक्तिगत भावे आमे जहाँ नजर रखिजु से माने भाबुचंती आमे केवल पाठ को ही परसु करिवु धंदामूलक कार्यक्रम बा धंदामूलक शिक्षा माध्यम रे तांको जेहेतु विशेष तांकर उन्नति नाही बोली से माने भाबुचंती किंतु हमर कैरियर गाइडेंस पोर्टल गोटे करा जाइछि एवं कैरियर काउंसलिंग मध्य करा जाउछि वोकेशनल एजुकेशन को स्पेशल इंपोर्टेंस दिया जाउछि आपण तो जानिचंती जातीय शिक्षा नीति रे मध्य दिया जाउछि तेणु पिला माननकु आमे कहूचु जे किभଳି भाबरे तमे एई पाठटा पढिले बा एई धंदामूलक शिक्षा तमे जदि ग्रहण करिवो तुमको किभଳି भाबरे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मध्य मिलिबो से क्षेत्र रे हमर जोटी 231 टी +2 स्तर रे धंदामूलक स्पेशल वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य रहिछि आउ तांकर एनएसक्यूएफ गाइडलाइन अनुसार अधिका आउ 7टी 8टी आमर स्वतंत्र सब्जेक्ट मध्य से इनक्लूड करा जाइछि जेमती वर्तमान परिप्रेक्षी रे ड्रोन टेक्नोलोजी गोटे नुआ जिनस जो थे से माने शिखिले ताकू मध्य से माने वृत्ति भाव में ग्रहण करी पारिबे सेही भली भाव में 7-8टी ट्रेड मध्य से इनक्लूड करा जाइछि। ठीक अछि मैडम ए जो कथाटी कहले मो कहवा कथा आपण मास एजुकेशन मध्य अछंती जो एसएमसी करा होची स्कूल मानकरे विभिन्न गाँव रे मध्य करा होची मु ये कथा कहिबार उद्देश्य या थिला जे आपण या पूर्व कहले जे टीचर मानकू
पठा जाउची घरे घरे बुलिकी पिलामानकु आणंतु आवश्यकता कौन प्रथम कहीं आपण पढ़ी आसछंती आमे भी गाँव पढ़ी आसते से समय कथा मुझे स्कूल न जाऊली मो बापा मते बाड़ी पठाऊला बा मोर हेडमास्टर जो मैंने थे पूज्य हेडमास्टर अच्छा हाटरे बजार देखागले अरे अमके तो पुओ कहीं आसीनी ये जो आदर थिला ये वास्तव रूप नौला से समय कहीं आम घर को जाऊन ये गोटे कथा जो बर्तमान आमे जाऊँ घर को तार कारण हूँ या एसएमसी जो गुड़ाक आपंकर मीटिंग रखुंट वास्तव रूप नौ कि सेठी पिला आगे जो हट्टगोल होची पिला कौन मानसिक स्तर में गोटे भल मनीष हाँपाई कौन से सुजोग पाउची नहीं से भी सत कथा मुझे सहित सहमत अनेक क्षेत्र में सब चली किंतु तांकर दायित्वबोध जो सामाजिक दायित्वबोध एसएमसी गुड़िकर रहिबा कथा ता सांप्रतिक परिप्रेक्षी से सम परिमाण में नहीं तथापि आमे विभिन्न विद्यालय रे वर्तमान पेरेंट टीचर्स जो मीटिंग करा जाउची ता आमे माने रेगुलरली करूचु मु केतोटी विद्यालय मध्य परिदर्शन ने जाइथिली सेही परिप्रेक्षी रे किछि बापा माँ मध्य मु देखिली से माने काम को न जाइकरी जो माने विशेष साक्षर नुहंती तथापि से माने सचेतन हेलेनी जे प्रधान शिक्षक बा टीचर्स डाकिचंती पिलार भल पाई ताहले आमे काम बंद करिकि मध्य गोटे दिन जाइकरी उपस्थित हेबु निश्चित भाव में सकारात्मक परिवर्तन हेइची बोली मु विश्वास करू निश्चित भाव आप जो कथा कहउछन ठीक अछि हमर तो बहुत डिप्लोमा स्कूल रो अछंती सार माने मैडम मैंने अच्छा तेणु गोटे जो मीटिंग डाकुंट पेरेंट्स टीचर मीटिंग आप 10% प्राय गार्डियन आसुना यार अर्थ ओडिशा रे प्राइमरी एजुकेशन जदि स्ट्रांग हम आवश्यकता ना अनेक किसी करवा भविष्य को दैट्स राइट गोटे कथा आउ गोटे कथा मु मैडम आपन कहि रखे एसएमसी जदि आपन करूचंती दयाकोरी शिक्षक मान दूरे रखंतु ये प्रस्ताव एटा होची प्रस्ताव गोटे माने मोर व्यक्तिगत मत कहीं ना एसएमसी माने जो माने आसुचंती हेडमास्टर बा टीचर्स जो माने शिक्षा दान करुचंती पूज्य गुरु तांकु जो प्रकार व्यवहार करुचंती ए ओडिशार चित्र एटा कारण मो व्यक्तिगत गाँ कथा कहूनी अनेक गाँ सहित बुलीची शिक्षा संगठन सहित मोर संपर्क अच्छी सेठी जहाँ देखुचु पिला मानकर से मानसिकता आसुना आ गोटे बड़ कथा पिला मानकर पेशेंस रहुना पाठ पढ़ा घंटे 2 घंटा बसिबा शुणा ए कथा केबे होउना कहीं प्राथमिक स्तर रे सेटा हला गोटे माने आपनकर फाउंडेशन कोर्स आपन कहले अत्युक्ति हबो नाही शनिवार दिन आमे पाठ पढ़ला बेले बा आपन पढ़ुतला बेले SUPW गोटे क्लास थिला बा गोटे पीरियड थिला सेथिरे हमरे घागुचिया छोट छोट गछ को अनाबना गछ को हम उपाड़ुथले गोटे भल गछ को आमे उतारुथले पानी भल मंद देकी आमे ताको जीवंत करूथले सेठी हमर वृक्ष सहित संपर्क आसुथला परिवेश सहित संपर्क आसुथला मानसिक स्तर हमरे गोटे फिट थिले जेते गोटे पिला को आमे दूरे रखुचन सेतिरे 20-25 वर्ष होती कहते तू गछ लगा से लगे पार ये मु कही रखे से जो कम्युनिटी अवेयरनेस बा कम्युनिटी डेवलपमेंट से आम गोटे प्राथमिक पर्यायर आलोचना करिचु तांकर जो रिपोर्ट कार्ड दि जाउची मैट्रिकुलेशन ने तांकर विभिन्न क्लास रे दि जाउची रिपोर्ट कार्ड से आमे यही कम्युनिटी डेवलपमेंट जदि गोटे पिला जड़े को भी पाठ पढ़े कि लिटरेट करि पारिछि गोटे जे केवल ना लिखि जानी नांती किंबा जड़े किंबा 2 जन को करछि ताले से ए ग्रेड पाइबो आमे एटा पर्याय माने आलोचना रे रहिछि ताको आमे कार्यकारी करिबु ता छडा किए केतोटी गछ लगेइछि सेतरे केते गुड़िए अनेक गुड़िए विभाग रही कौ क्षेत्र में किए कौन माने परिवेश सहित कौन अवेयरनेस क्रिएट करछि किए केतोटी गछ लगेइछि किए काहा को लिटरेट करि पारछि सेही भली भाबरे आमे पिलांकर जो गोटे कमिटी गठन करा जिवो जोतरे कि हेडमास्टर रहिबे जने सीनियर मोस्ट टीचर्स रहिबे तथा आउ काहाकू से जदि मेम्बर रखिपारे प्रति पिला को से माने रिपोर्ट कार्ड देला बेले जानवे ये पिलाटी हाँ एति गछ लगे एति अवेयरनेस विभिन्न विषय रे सृष्टि करि पारछि तदनुजाई ABC ग्रेड दिया जिवो एवं ताहा कम्युनिटी डेवलपमेंट रे जो प्रोग्राम रे से रिपोर्ट कार्ड रे उल्लेख करा जिवो ताहा वर्तमान आलोचना स्तर रे रहिछि हुए तो निकट रे कार्यकारी करा जिवो। हेलो मैडम नमस्कार मु एबे आमे समस्ते न्यूज़ पेपर रे देखिथिले के दिन तले जे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो 10th बोर्ड परीक्षा पाई से माने वर्ष को 2 थर परीक्षा करी बोली गोटे बाहर थिला किंतु आमर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आम ओडिशा रे लागू हैला 5+3+3+4 अनुसार
आमर आउ 10th परीक्षा नाही बोली केते खबर काज बाहर थिला आपन से पोजिशन मैडम टे क्लियर करिवे कि आमर आगामी दिन रे ओडिशा बोर्ड रो 10th परीक्षा अछि कि नाही सीबीएसई बोर्ड अछि बोली से माने क्लियर करचंती आमे आम राज्य माने इंडियन लेवल तो 10th परीक्षा अच्छी ते विषय निर्दिष्ट अप्रूवल नहला परे आमे किछि कहि परिबुनी दैट 5+3+3+4 जोटा रही सेटा तो नोटिफिकेशन बाहरी सारी एवं दुई थर परीक्षा करिवा पई मध्ये गोटे आ गोटे माने इम्प्रूवमेंट चांस दबा पई मध्ये जोटा नूतन एजुकेशन पॉलिसी रे रखा जाईची किंतु 10th क्लास रे परीक्षा करा जिवो पूरा बंद करा जिवो बोली ए पर्यंत किछि निष्पत्ति हेई नाही किंतु खबर काज बाहर थिला जे एणिके ओडिशा बोर्ड रो 10th परीक्षा हबनी किंतु हमर नेशनल लेवल से बोली किछि निष्पत्ति वर्तमान सुधा हेई नाही हेई करा जिवो थैंक यू मैडम नमस्कार आम समस्ते आपण को ये पाई डिस्कसन कर निश्चय कृतार्थ मैडम मोर गोटे सब मन रहे आम भी गाँव आसलु सार जो कथा कहले एबे सहर चाकचक्य भितर आम देखुचु समस्ते पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल प्रति ओरिएंटेड इटी मोर गोटे क्वेश्चन आसी मैडम गवर्नमेंट स्कूल को नैतिकतार स्खलन हो गई ना प्राइवेट स्कूल प्रति लोकंकर फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छी बोली प्राइवेट स्कूल को जाउचंती नहीं मु आपणक सहित तो एकमत नुहे किंतु कोविड परे तापरे जेते बेले हमर आदर्श विद्यालय रे पिला संख्या अधिक होइचंती जेतु भल पाठ पढ़ा होउची सेमान भितरे कंपटीशन करी करी पिला को निया जाउची छड़ा पेरेंट्स माने मध्य अनेक पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल लो पिला को आनी गवर्नमेंट स्कूल लो उपस्थान संख्या एबे अधिक हेइची तार गोटे कारण बेसिक तार कारण होउची मैडम आपण जो 10% जो इंजीनियरिंग मेडिकल रे देइचंती रिजर्वेशन पॉलिसी सेइति पई हुए तो सामा इट इज सेटा एकमात्र कारण नुहे सेटा एकमात्र कारण नुहे गुड मिनिट मैडम नमस्कार मु गोटे रियल फैक्ट कहबी आम एनईपी उपर वर्तमान मूलदुआ पकईवा जाऊे किंतु कथा होची इंग्लिश मीडियम आ ओडिया मीडियम पिलांक भितर दुई जन जदि ठिया होइथिबे तांक भितर सेमानकर मानसिकता एवं निजर उपरे विश्वास भरोसा पाई मु गोटे छोटिया उदाहरण देवी आमे स्टैंडर्ड 1 इंग्लिश मीडियम गले सेमाने कंप्यूटर टीचर रखिचंती एवं से मैंने आबाकस आरंभ करी शेषकु जाभा पर्यंत मो झील कथा भी कहूँ से स्टैंडर्ड 12 रे से जाभा जी शिखी हुए तो इंजीनियरिंग से न शिखी किंतु से IIIT रे पाठ पढ़ी भल कैंपस प्लेसमेंट पाई पारिला कथा होची आमे ओडिया मीडियम रे जदि कोडिंग न जानिबा जदि किछि कंप्यूटर विषय नॉलेज नथिबो 10th श्रेणी पर से तोले जाए ताकू आमे कहिबा C++ डाटाबेस की डाटा स्ट्रक्चर एगुड़ा न पढ़ी डायरेक्ट कौन कोडिंग कौन एबे AI थ्रू रे कोडिंग आम जो मनकर मिशाण न जानी गुणन केबे करि परियानी तेणु सेमती कोडिंग न जानी आपण किछि प्रोग्रामिंग लिखि परिबेनी हम गोटे मैटलैब रे प्रोग्रामिंग लिखला बेलको आधा घंटे 5 पेज 10 पेज करिया पड़थला तेणु सेही सिस्टमटा ओडिया मीडियम रे करूछंती कि नाही थैंक यू कोडिंग को अंतर्भुक्त कराई एवं कंप्यूटर टीचर रखिया पाई प्राय व्यवस्था चूड़ांत पर्याय रे पहुँची तेणु 8000 प्राय 8000 खंडे कंप्यूटर टीचर रखियार व्यवस्था रही जदिओ मु सीधा सड़क से विषय रे बुझु नाही ओसेपर जी आमर SPD अच्छी तांकर तत्वावधान में एसबू कार्यक्रम ग्रहण करा जाउची तेणु निकट रे तार व्यवस्था करा जिवो We'll be proceeding on to felicitate our guest speakers of the day. I'll request Kumar Chandan Anand, founder, CEO and group editor, Ardacom Media Group, to felicitate Srimati Subhashri Nanda, IAS, Chairperson, Council of Higher Secondary Education, Additional Secretary, School and Mass Education Department, Government of Orissa. Ladies and gentlemen, with a big round of applause as we felicitate all the dignitaries on the dais.
Up next, can we felicitate Dr. Mamta Panda, Deputy Director, Higher Education Department, Government of Odisha. Up next, Shri Ajit Sarangi, CTO, Odisha Skill Development Authority, OSDA, Government of Odisha. Up next, Mr. Manik Kathuria, Regional Account Director, Coursera. I'll request our dignitaries to come for a quick group photograph.